The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. Jannah. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. Dear viewers of Madni channel, welcome to our live transmission, Path to Success. Inshallah Azza wa Jal, the great news for all the viewers of Madni channel, that Inshallah Azza wa Jal in today's our silsila, ایک بڑی خوشخبری آپ کے لیے. ہمارے سلسلے میں انشاءاللہ ٹوڈے نگران شورا حاجی مولانا عمران اتاری انشاءاللہ کرم فرمائیں گے. اس کے بعد حاجی عبدالحبیب اتاری بھی انشاءاللہ ہمارے سلسلے میں کرم فرمائیں گے. تو اینڈ تک سلسلہ دیکھتے رہیے گا, بہت سارے مدنی پھول ملیں گے. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا ٹاپک جو اناؤنس تھا وہ تھا صدقہ, چیریٹی. اینڈ ٹوڈے وی آر انفلکٹڈ with various diseases, troubles and calamities, and are seen complaining about having no blessings in our sustenance, in our family, in our wealth. One of its reasons can also be the fact that we have stopped ourselves from spending in the path of Allah Almighty, whereas Allah Almighty increases the sustenance of those who give sadaqah, charity. As the Prophet sallallahu alaihi wasallam has stated, sadaqah does not reduce the wealth. So inshallah azza wa jal صدقہ کافی بڑے مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے. آج اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ آج ہمارے مبلغ وسیم بھائی ہیں, جامعۃ المدینہ اسٹوڈنٹ ہمارے بلال بھائی, توقیر اتاری اینڈ حافظ عدیل. سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک انشاءاللہ عز و جل, اس کے بعد کلام, and then we move on to our topic. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن
الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے ہاں گر ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندائی ہے مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے
کسوں کے آقا، بے کسوں کے آقا، اب تیری دہائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، اب آپ سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائیں، اب آپ ہی سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائیں، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، طیبانہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ MashaAllah, beautiful kalam written by Sayyidi Ala Hazrat. Alhamdulillah Azza wa Jal, today's our topic is very vast, sadaqah, and many things will be covered inshallah Azza wa Jal in today's topic. Inshallah very soon we'll be blessed to having here
in the company of Nigrane Shura and Rukne Shura, Haji Abdul Habib Attari. آئیے start کرتے ہیں درود پاک سے. There are countless virtues and blessings of reciting درود پاک, the best of creation, sallallahu alayhi wasallam. The Prophet sallallahu alayhi wasallam has said, زَيِّنُوا مَجَالِسَكُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Decorate your gatherings by reciting peace upon me, as this will be nur for you on the day of judgment. Subhanallah. Sallu ala al-Habib sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. First, inshallah, we'll start from our Wasim Bhai. Wasim Bhai, today's topic is Sadaqah, donation. Alhamdulillah, Charity. First of all, mashallah, the topic that you have chosen, Sayyid Sahib, today, Sadaqah, is a great blessing, alhamdulillah. And the definition of Sadaqah, today's topic is Sadaqah. The definition of Sadaqah is mentioned, the Sayyid Sharif Jurjani Hanifi rahmatullah alayhi has defined. The Sadaqah is that contribution through which one can have a hope of reward from Allah Azza wa Jalla. And in regards to Sadaqah, there's a beautiful, beautiful, beautiful story that motivates us to give Sadaqah, to give in the way of Allah, and also to donate Sadaqah, inshallah. It's mentioned that there was this one king, and he ordered the people of his country that no one is allowed to give in the way of Allah. No one is allowed to give charity. So what happened? One day this woman, and she's sitting there, and this one man comes to her and says to her that, please give me something for the sake of Allah. She said, listen, the king has ordered us that we are not allowed to give anything at all in the way of Allah as charity. And if we do, the punishment is that our both hands will be cut off. Allah. So she refused him, but he kept insisting. He goes, I haven't eaten for a few days. Please give me something for the sake of Allah. So she said that, okay, here, have something for the sake of Allah. Now what happened? The king found out. Now what happened? He ordered his soldiers that go and chop her hands off. So it's mentioned that both of her hands, they were chopped off. Then after a while, the king, he expressed a desire to his mother. He said to his mother that, I want to get married. Please find me a beautiful woman I can get married to. So his mother said to him that this is one particular woman. She is so beautiful. No one is as beautiful as her. But the only problem that she has is that both of her hands are chopped off. She does not have two hands. So he agreed. They both got married. And after some time, the king had to go to another country. And the wife of that king, they were already telling the king that, listen, your wife, this new wife that you bought, she's not a good wife. She betrays you, she does this, she does that. But the king, he continued to ignore the other wives. Now when the king, he went to the other country, now they sent him a letter that your wife, your new wife, she has betrayed you. She has given birth to a child and she has betrayed you. So it's mentioned that he sent a letter to his mother that, please kick my new wife out of our country. It's mentioned she followed his order, and his new wife, she was kicked out of the country. Now what happened next? Sayyid Sahib, this woman, she's all alone in the jungles, and she's got no hands, and she's got her newborn child as well. What happens? She's thirsty and she goes towards the stream. Now as soon as she's trying to take some water out to drink, her child falls into the stream. Allah. Now she's crying. First of all, she's got no hands, and then her newborn child is falling into the stream. She's crying, she's screaming. All of a sudden, two handsome, beautiful men, they came towards her. And they said, what do you want? She said that my child has fallen into the stream. They said to her, that, do you want your child back? She said, yes. Then they said to her, that, do you want your hands back? She replied, yes. It's mentioned that those two beautiful men, they got the child out of the stream alive, and both of her hands were restored. So she said, subhanAllah, my child has come back first of all, and then also my hands have been restored. It's mentioned that then those two men, they asked her, that, do you know who we are? She replied, no, I don't know who you are. It's mentioned that those two men, they said to her, we are those same two loaves of bread that you gave to the helpless poor person. Meaning, we have now come to help you. You gave something in the way of Allah. You went through various difficulties, but today we have come to help you in the time of need. So this shows you, this motivates you, that if we give something in the way of Allah, if we give charity, inshallah, we will get it back at that time when we are going through difficulties. MashaAllah, beautiful story in the starting of MashaAllah, Wasim Bhai, beautiful story. And it's also motivating us that we need to spend something in the path of Allah Almighty. Bilal Bhai. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen. Bapu, today's topic is Sadaqah. Today when we hear the word Sadaqah, unfortunately, maybe due to the nafs or due to other factors, we tend to kind of restrict our hands. We tend to turn away. We tend to kind of change the channel. We tend to move away from that situation. This is when I start asking about the money and the donations. But there's one thing as a Muslim which you have to keep in mind, that when we give in the path of Allah Azza wa Jalla, there are many, many other benefits. It may seem that we are losing our apparent wealth.
But there is one thing which we learn from the blessed Quran Sharif, where Allah subhanahu wa ta'ala states that when a person gives sadaqah in the path of Allah, these are the qualities of the pious people. So my main point for this point right now is that if a person wants to attain taqwa, if a person wants to attain the fear of Allah, if a person wants to attain closeness to Allah subhanahu wa ta'ala, he should give in the path of Allah. Now I'd like to mention Quranic ayat in support of this claim. Allah subhanahu wa ta'ala has stated in the glorious Quran in the first para, Bismillahir Rahmanir Rahim, Hudal lil muttaqeen الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Translation from Kanzul Iman, a guidance for the righteous. The Quran Sharif is a guidance for the righteous. And who are those righteous? Those who believe in the unseen. And they establish the fard prayers. And they spend in our path from what we have provided them. Now first and foremost, we may have missed this point, but Allah subhanahu wa ta'ala mentions about the excellence and the glory of the Quran Sharif. And then they link that it is a guidance for the pious people. Okay. And when describing, explaining the pious people, Allah subhanahu wa ta'ala also mentions, from what we have provided them, they give in the path of Allah. So when we link and we listen to the commentary of Sayyid Mufti Muhammad Naimuddin Murad Abadi alayhi rahmah, that when they mention وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, they state that spending in the path of Allah means to give obligatory charity. For example, our zakat. And in another place, Allah Azza wa Jal states, يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. And here, in this ayat, the Mufti Sahib states that it means to spend freely and unconditionally. And in this sense, it mentions whether it be our obligatory, wajib or optional charities as well. Okay. So, this point to summarize, when a person gives sadaqah, our mindset as Muslims should be that we are attaining piety, we are attaining the closeness of Allah subhanahu wa ta'ala. So, and when we give, we are not losing out. And there's one more ayat, Bapu, that Allah subhanahu wa ta'ala says in the beginning of para number 4. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Translation of Kanzul Iman, you shall never attain virtue, righteousness, taqwa, piety, until you spend in Allah's path those things which you love. So many beautiful points. And finally they say, and Allah is aware of whatever you spend. Now commentating on this verse, Allama Maulana Sayyid Muhammad Naimuddin Murad Abadi states that they narrate a quote that Sayyidina Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhuma has said that spending here refers to general and common spending, all sadaqat. And we also understand from the waqia of Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi ta'ala alayhi, that when they used to purchase sacks of sugar and they used to give brown sugar in the path of Allah, and then they were asked, why do you give the actual sugar, why do you not give money instead? And they mentioned that I love sugar, so I want to give that which is beloved to me in the path of Allah. जो कुरान पाक में तुम अपनी बेहतरीन चीज जब तक अल्लाह के रास्ते में ना दो हैं, उस वक्त तक तुम उस मकाम पे नहीं पहुंचोगे. तो क्या कहते हैं, अब हम भी गौर करना चाहिए कि हम क्या चीज देते हैं जो हमारे काम की चीज नहीं होती ना. Then we give in charity. The clothes is useless for us, we give in charity. जो बेड सेट होता है हमारे काम का नहीं होता, our shoes, our stuff, our household stuff जो हमारे काम की नहीं होती ना, तो हम जब कहीं डिजास्टर आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो ठीक है वो भी, लेकिन कुरान पाक जो अपनी बेहतरीन चीज जो आपको पसंद है वो दे, उसका सवाब कुछ और ही है. तो हमें भी गौर करना चाहिए ना. वो खाना फेंकना था, वो उठाकर इन्होंने भेज दिया मदरसे में, चले ठीक है आपने भेजा, लेकिन अगर आप गौर करते हैं कि सवाब क्या, अपनी पसंदीदा चीज, तो उसकी तरफ भी तो आना चाहिए ना. हमारे को कपड़े फट गए फेंक रहे थे, अगर अच्छी चीज ली जाती और वो दी जाती किसी को, तो उसका सवाब क्या होता. So in regards to this, you mentioned that we should give our thing, that thing which is more beloved to us. A beautiful waqia of Sayyidina Abdullah bin Umar radiyallahu anhu. It's mentioned that one day he fell ill. So in Bapu, you know, when you feel ill, you like to have something specific. Something comes to your mind that I want to have that thing, I want to have that thing. So it's mentioned that he had this desire that I want to eat some grapes. So he told his slave that go and buy me some grapes, I want to have some grapes. It's mentioned that as soon as his slave came back with some grapes, he's about to eat the first grape, and someone knocks on the door. Right. Someone says, please, for the sake of Allah, give me something. Now what happens? He was about to eat the grapes, and you know when he was ill, that time he wants to eat any grapes. It's mentioned
that he said to his slave that these grapes that you have bought, go and give it in the way of Allah, give it to the poor person. This shows you that our pious people, our pious predecessors, they used to give that thing in the way of Allah, which was beloved to them. توقی بات تسی کی باسو آج ماشاءاللہ بہترین گلاں بھائی نے وسیم بھائی تا بلال بھائی نے اصل میں جرا اسنا ذہن ہونا میں بالکل جرا قرآن مجید نے ترغیب دلائی ہے کہ اسا اپنی بہترین چیز اللہ نے راہ خرچ کرا اللہ اسا جو اسا محبوب لگا سب سے بہترین لگا وہی چیز اسا اللہ نے راہ دیں لیکن اسا نا اس نے برعکس کرنے ہیں جڑی اسا کی محب پیاری چیز ہونی ہے پیاری لگنی ہے وہ اسا کول رکھنے ہیں جڑی پھٹی چتری پجی چھڈی ہوئے وہ اسا اللہ نے راہ پھر دے چھٹنے ہیں اس نا خیال کرنا چاہیے نا بالکل او بھی دیو لیکن جو بہترین ہے جیسے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ واقعہ بیان کیتا گیا کہ او چینی دینے ہونے سے اللہ نے راہ وچ وجہ پوچھی گی کہ می کی چینی پسند ہے تو میں اس لیے چینی اللہ نے راہ وچ دے دیا تو اس نے سوچنا ایسا کہ بھی یہ چاہنا چاہے کہ اساں جو چیز اللہ نے راہ وچ دینے ہیں وہ اساں کی پیاری ہے محب ہے یا ایویں فالتو ٹکی ہے کار اساں اس نا کوئی مقصد کو نہیں کوئی اس نا یوز کو نہیں تو اساں اس کی چاہتے اللہ نے راہ وچ دینے ہیں وہ بھی دیو انشاءاللہ اچھی نیتوں سے اس نا بھی ثواب لبسی لیکن جڑی چیز اساں کی پیاری ہے وہ اللہ نے راہ وچ دیسا انشاءاللہ زیادہ ثواب لبسی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیوٹیفل مدنی پھول انشاءاللہ عز و جل soon we will be blessed to having نگران شورا and حاجی عبدالحبیب اتاری. آج جو ہمارا وظیفہ ہوگا اس کو بھی ابھی سے نوٹ کر لیجئے and very attractive. آج لوگ پوچھتے ہیں جی یہ بتا دیجئے کہ ہماری خواہشات کیسے پوری ہو ہماری پرابلم جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ پرابلم ختم ہو اور ہم ہمیں جو ملنا چاہیے جو ہماری خواہش ہے وہ ہمیں مل جائے. آج کا جو وظیفہ ہے ڈیزائر بینگ فلفلڈ انشاءاللہ آخر میں وہ بھی بتایا جائے گا. جو ٹاپک ہے ہمارا اس صدقہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ has said صدقہ increases the age, wealth and sustenance. یہ تین چیزیں ہیں جو انسان کہتا ہے یار میری عمر بھی بڑھ جائے میرا رزق بھی بڑھ جائے اور میرا جو ہے وہ جو دولت ہے وہ بھی جو ہے اس میں بھی برکت آ جائے وہ بھی بڑھ جائے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے give صدقہ ہے spend something in the path of Allah Almighty. Allah Azza wa Jal increases the age, sustenance and wealth. If someone has a habit of giving sadaqah, he will never become needy. He will attain goodness and blessings. Troubles and calamity will be removed. 70 doors of evil will be closed. 70 types of calamities will be removed. His city will prosper. Distress will be removed. Worry will vanish and satisfaction will be attained. Help of Allah Almighty will be included. The mercy of Allah Almighty will become wajib for him. Angels will send salat upon him. He will do the work which brings about pleasure of Allah Almighty. The wrath of Allah Almighty will end from him. His sins will be forgiven. Forgiveness will become wajib for him. The fire of his sins will extinguish. He will remain protected from hell on the day of judgment. The fire of hell will be haram for him. He will be blessed with the favor of Allah Almighty in the hereafter. If Allah Azza wa Jal wills, then he will be among the blessed group which will enter heaven first by the wasila of these blessed shoes of the beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam. اتنے فضائل اعلیٰ حضرت نے بیان کیے ہیں. مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کتنا صدقہ کرتے ہیں. اچھا صدقہ جو ہے is not only about the money. یہ بھی یاد رکھیں. اب فوراً ذہن میں آتا ہے کہ talking about the charity تو یار میں کہاں سے چیریٹی دے سکتا ہوں. جی بالکل چیریٹی کی بہت ساری قسمیں ہیں. ایک قسم چیریٹی کی مسکرانا بھی ہے. مسکرانا بھی صدقہ ہے. جی ہاں اسمائلنگ کسی مسلمان کو دیکھ کر آپ مسکرائیں گے اس کی پریشانی دور ہوگی. مسکرانا بھی صدقہ ہے. اور لوگوں کے کام لوگوں کی مدد کرنا یہ بھی صدقے میں آتا ہے. کوئی پتھر گرا ہوا ہے کوئی چیز جو ہے لوگوں کو تکلیف دینے والی اگر وہ راستے سے ہٹاتے تھے یہ بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے. آئیے اس کی طرف بھی تھوڑا سا بڑھتے ہیں اور پھر چلتے ہیں اپنے جو ہے وہ مزید جو ٹاپک ہے یہ بڑا واسٹ ٹاپک ہے. ہمارے ذہن میں ایک ہی چیز آتی ہے جیسے ہی بات کی چیریٹی کی صدقے کی یہ بات کریں گے پیسے کی. آج پیسے کی بات نہیں ہوگی. آج ان چیزوں کی بھی بات ہوگی جس کو ہمارے اسلام نے بیوٹیفلی ڈیفائن کیا ہے کہ صدقے کے اندر اور کیا کیا چیزیں آتی ہیں. Alhamdulillah, what Sayyid Sahib just said about in regards to sadaqah. Sadaqah is not only giving money in the way of Allah, but sadaqah is also many other things. Now, for example, if you smile at someone,
this is also a form of sadaqah, inshallah. It's mentioned that if you invite someone towards righteousness, this is also a form of sadaqah. So first of all, Sayyid Saab, you're inviting him, you're doing this good deed upon him by inviting him towards the masjid, towards righteousness. This is a good deed that you're doing upon him, but also you get the reward of sadaqah. If you guide a misled person, this is also a form of sadaqah. If you help someone with weak eyesight, this is a form of sadaqah as well. So this is different ways of sadaqah that we can attain. वसीम भाई ने तो लाइन लगा दी माशा, बड़ा इजी होता जा रहा है ना, पैसों के अलावा भी सदके का सवाब मिल सकता है आपको. बात ये है नॉलेज कितना है हमारे पास. दिस इज द मेन प्रॉब्लम. वी डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट आवर ब्यूटीफुल दीन इस्लाम. वी डोंट हैव दिस नॉलेज कि और किन किन चीज़ों के ज़रिए जो है हम सवाब कमा सकते हैं, किन किन चीज़ों के ज़रिए हमें बरकतें मिल सकती हैं. बिलाल भाई. Ji Bapu, when it comes to sadaqah, as well as linking sadaqah to taqwa, piety, as well as mentioning smiling, there's one point which is very beautifully, even the word sadaqah has an inner meaning inside of it. It's stated by Sayyidina Shaykh Ismail Haqqi Hanafi, rahmatullahi ta'ala alayh. They mention in Tafsir Ruhul Bayan that 4 Madani pearls regarding the lafz sadaqah. And they state sadaqah has 4 letters: Sad, Dal, Qaf, and then Ha, when you do waqf. So, and with the first letter Sad, this means as-sad, which means to prevent. I.e., sadaqah prevents every hated thing of the world and the hereafter from approaching that individual who gives sadaqah. So from Sad, it means sad. Sad means to prevent. The whole, every disliked thing in the world and hereafter is prevented from reaching that person who gives sadaqah. When it means by Dal, Dal means dalil. Dalil means to guide. Sadaqah guides the individual who gives in the path of Allah towards Jannah. When it means by Qaf, Qaf refers to qurb, to attain proximity, closeness to Allah. And sadaqah, when a person gives in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, this attain proximity in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. And Ha, meaning hidayah, guidance, as the one who gives sadaqah attains guidance from Allah subhanahu wa ta'ala. माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात. ब्यूटीफुल मदनी फूल्स हम ले रहे हैं. तौकीर भाई ने माशाल्लाह गुलाबी गुलाबी पटवारी में थोड़ी सी बातें की. आइए कुछ इंग्लिश में भी तौकीर भाई, some मदनी फूल्स. जी, Wasim bhai quickly mentioned about the smiling. You know, generally in our day and age, unfortunately the habit of smiling is dying out. Amir al-Sunnah Aliyah, they mentioned this many a time during the Madani Muzakire. They mentioned this many a time, that we need to get into the habit of smiling. It just seems like everyone's so busy in life that we forget that even we need to smile. Okay, sometimes someone comes to us and he just wants to see that smile from us. And if we remember this hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that smiling is a sadaqah. And then we smile at him, inshaAllah ta'ala, that one smile, it can win the heart of that Islamic brother, and we get the reward of sunnah and charity as well, inshaAllah ta'ala. So there's many benefits of smiling, the vaster meaning of sadaqah, like you mentioned already, including invitation towards righteousness. Alhamdulillah, this Madani environment of Dawat Islami, it's built on this one momentum, that I must strive to reform myself and the people of the entire world. I must do good deeds myself. I must invite others to call others towards righteousness. I must save myself from mishabits, evil actions, and prevent other people as well, inshaAllah ta'ala. If we take these forms of sadaqah into our society, don't just think that giving money is sadaqah and that's it. But rather these forms of sadaqat as well, if we spread them in our society, inshaAllah ta'ala, our society will become a beautiful place. Some of them, even they give charity, they still been deprived. Why? Because they show off. Ostentation. लोगों को जताते हैं, एहसान जताते हैं, पैसा दे के, किसी की मदद करके, तो वो मतलब वो फिर भी डिप्राइव रह जाते हैं. गौर करना चाहिए कि आप, अच्छा किसी ने पैसा नहीं भी दिया लेकिन वो मुस्कुरा कर देख रहा है, उसको सदके का सवाब मिल रहा है. तो आप जरा मुस्कुराइए. मदनी चैनल के नाज़रीन भी देख लिया हमारे के अदकल्ला उससे. तो ये कोई मुस्कुरा रहा हो मुसलमान, तो उसको देखकर ये दुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, ये दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में, दावत इस्लामी के मदनी माहौल में ये सिखाई जाती है. मैंने भी दावत इस्लामी के मदनी माहौल में ये दुआ सीखी थी. और मुस्कुराना वाकई दावत इस्लामी वालों का एक
कहते हैं ना खासा, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि यार वो बड़े मुस्कुराते, बड़े मीठे मीठे इस्लामी भाई हैं, बड़े प्यारे प्यारे इस्लामी भाई हैं। तो बहुत सारे लोग इज्तिमा में सिर्फ इसलिए आते हैं कि मुस्कुराहट के लिए, लेकिन आज कल अगर देखा जाए तो मुस्कुराना भी नहीं आता है। अक्सर निगरानी शुरा और बयानात में होता है कि यार मुस्कुराने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मुस्कुराना भी नहीं आता है, शीशे में खड़े होकर अगर देखे तो बंदा खुद ही डर जाएगा कि मैं मुस्कुराता कैसे हूँ। घर वाले बच्चे भी कहते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो मुस्कुराना भी सीखना पड़ेगा, कैसे मुस्कुराया जाता है। अल्लाह ताला हमें मुस्कुराने की तौफीक अता फरमाए। यकीन करें, वो कहते हैं ना कि डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। अभी 2 दिन पहले हमारे वसीम भाई, देखो फ्यू यंगस्टर दे केम एंड वसीम भाई विद देम एंड दे सेड नाउडेज द इशू इज अबाउट डिप्रेशन, about distress, about the youngsters especially डिप्रेशन के मरीज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा जो है वो डिप्रेस हो जाते हैं फौरन। अच्छा, ये जो मुस्कुराना है ना, स्माइली फेस, ये डिप्रेशन को किल कर देता है। आप किसी को बंदा पर आप जाएं और आप मुस्कुराएं, वो आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही खत्म हो जाएगी ना। तो लेकिन वो वही बात है कि हमने मुस्कुराना नहीं सीखा, हम हर वक्त गुस्से में होते हैं, ऑलवेज वांट आर्ग्यू विद समवन। ऐसा लगेगा कि पता नहीं ये बंदा हर वक्त गुस्से में है। तो मुस्कुराएं, चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। यकीन करें डिप्रेशन सब खत्म हो जाएगा। So Yusuf, in regards to this, you mentioned a very valid point. Why? Because today science is also proving that if a person smiles, a few benefits of smiling is that smiling can lift your mood, lower your stress, boost your immune system, and possibly even longer your life. And it's mentioned that smiling reduces your stress. Today, like you mentioned, that today unfortunately a lot of people, they're suffering from mental health, depression problems, stress problems. It's mentioned that if you smile, this will remove your stress, inshallah azza wa jal. And this will also, today we also meet people, they've got high blood pressure, lower blood pressure, etc, etc. It's mentioned that if you smile, this reduces your blood pressure. बल्कि मैं एक और अर्ज करूंगा ना, you know when you go to take picture, you say smile please, for 5 seconds you smile और पिक्चर बड़ी खूबसूरत आती है। अगर जिंदगी में मुस्कुराना सीख ले तो जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। 5 सेकंड के मुस्कुराने से पिक्चर अच्छी हो सकती है, तो जिंदगी भर मुस्कुराने से जिंदगी भी अच्छी हो सकती है। मुस्कुराने की आदत बनाएं, इंशाल्लाह आप देखें बहुत सारी प्रॉब्लम, गुस्सा आ रहा है, एकदम गुस्सा आ रहा है बच्चे के ऊपर, किसी के ऊपर, थोड़ा कंट्रोल कर लें, यकीन करें बहुत सारे मामला ठीक हो जाएंगे। तो किर भाई तुसी की बासो बापू, वो आला हजरत ना बहुत ही प्यारा शेर याद आ रहा है, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस परे, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों अल्लाह अस सारे ये सोचना कि एक झलक आसा की उस प्यारी प्यारी मीठी मीठी सोनी सोनी मुस्कुराहट ही लभी जाता आसाना दुनिया भी तो आखिरत भी बेड़ा पार हुई जैसे इंशाअल्लाह ताला। तो बड़ा प्यारा मदनी फूल है मुस्कुराने वाले नाल। अल्लाह करे आसा की सारी आदत बनी जाए कि आसा मुस्कुराने रहा इंशाअल्लाह ताला, तो खुशियां बांटने रहा। मेन ये चीज है कि आपू भी मुस्कुराओ, खुश हो, तो दूसरों की खुशियां बांटने रहो, आपू भी टेंशन ना किनो, दूसरों की भी टेंशन ना दियो इंशाअल्लाह ताला। तो मौज मस्ती नाल इंशाअल्लाह सरकार ने सुनता पर अमल करने जन्नत दाखिल हो जाओ इंशाअल्लाह। उम्मे दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि आप बहुत मुस्कुराते रहते हैं, क्या वजह है? व्हाट इज द रीजन दैट यू ऑलवेज स्माइलिंग? कुछ होते हैं ना उनके स्माइली फेस होते हैं। तो उम्मे दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हा once asked Abu Darda radiyallahu, why you always smile? And he replied beautifully. हज़रत अबू दरदा रदियल्लाहु ताला ने जवाब दिया कि मैं जब भी अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गया उनको मुस्कुराते हुए देखा। तो मुस्कुराना सुन्नत भी है और मुस्कुराना सदका भी है, यानी कि सवाब भी मिल जाए और सुन्नत पे भी अमल हो रहा है। अगर आप इस नियत से होंगे कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराते थे, तो ये बहुत सारी चीजें। जी हाँ, हमारे अदील भाई काफी देर से खामोश हैं। जी बापू जान, माशाल्लाह मुस्कुराना जिस तरह तुसीं माशाल्लाह मदनी फुल दे रहे हो मुस्कुराने दे हवाले दे नाल, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस तरह साढ़े इस्लाम में दस्सिया कि मुस्कुराते सन, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल जेड़ा ना सहाबा कराम दा हुजूम लगा रहंदा सी कि उन्हां दी मुस्कुराहट दा, यानी उन्हां दा अंदाज ऐसा हुंदा सी कि सहाबा कराम दा दिल ही नहीं सी करदा कि वो थोड़ के घर जाण दा। यानी उन्हां दिल करना सी कि जब तक सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपना हुजरा मुबारक तशरीफ ना ले जान, उस वक्त तक कुछ सहाबा कराम तो ऐसे होंदे सन कि राती सारी खड़े होकर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा वेट करदे होंदे सन कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आवन तो उन्हें वुजू कराया जाए। यानी इतनी शिद्दत ना मोहब्बत असा चाहने कि अगर साढ़े नाल लोग मोहब्बत करना चाहने ना, तो असा अपनी स्माइल जड़ी लोगों देनी शुरू कर, यानी असा हर वेले अगर मुस्कुराना शुरू कर दईए ना,
محبت لوگوں دئیے نا تو انشاءاللہ لوگ تساں نال محبت کرسن. ماشاءاللہ بڑی زبردست. اچھا پیسہ بھی نہیں لگتا ہے کوئی پیسہ نکلتا ہے بڑا, یہ تو ایسے ہی مل رہا ہوتا ہے. تو مدنی چینل کے ویورز آف مدنی چینل پلیز ٹرائی ٹو میک اے ہیبٹ اسمائل. اسمائل کریں, گھر میں بھی کریں, دوستوں کے ساتھ بھی, لیکن موقع ہوتا ہے نا. اب یہ بھی سیکھنا, میں نے پہلے عرض کی نا, اب آپ کسی کے جنازے میں گئے مجھے تو وہاں تو نہیں آپ مسکرائیں گے, تو یہ بھی یہ ہوگا کہ کب کہاں مسکرانا ہے, کیا کرنا ہے, یہ سیکھنا پڑے گا. تو انشاءاللہ عز و جل کیپ واچنگ مدنی چینل, کیپ اٹینڈنگ دا اجتماعات آف دعوت اسلامی, ٹریولنگ ان مدنی قافلے, یا اس طریقے کی انشاءاللہ صحبت میں آئیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. You mentioned in regards to watching Madani channel, one great personality, the reviver of the Sunnah, our Shaykh Tariqat Amir Ahl Sunnah Damat Barakatum Aliyah, who today alhamdulillah is reviving the Sunnah across the world. If you look at him, he once mentions that when I meet people, when I do mulqat with people, at times 5, 6, 7 hours I'm meeting people. But if you look at Shaykh Tariqat Amir Ahl Sunnah, he's smiling at everyone. And he himself says that at times, my jaws, my bones, they hurt. They start to hurt me, but because it's a sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam to smile, this is why I continue to smile. And in regards to Amir Ahl Sunnah, it's mentioned there was one actor, Bapu, and he traveled from a different country all the way to Karachi, and when he spoke to Amir Ahl Sunnah, he goes, I have traveled all that way just to see your beautiful smile. That's true. You know, for 5-second mulaqat, they travel for such a distance, 5,000 miles, 10,000 miles, just for 5 seconds or 8 seconds mulaqat. اس سے زیادہ تو نہیں ہوتی ملاقات, بہت کم ہوتی ہے. بہت خوش نصیب جن کو لمبی ملاقات, وہ لائن میں لگتے ہیں, کتنی دیر لائن میں لگتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں. صرف ایک جس کی ہے وہ کیا وہ ہے نا کہ شربت نہ دے کرے بات لطف سے, یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی. تو میرے امیر اہل سنت مسکراتے بھی ہیں اور پیارا پیارا ان کا لہجہ ہے. اللہ تعالی ہمیں جو ہے امیر اہل سنت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی ماشاءاللہ بالکل ویری سون انشاءاللہ عز و جل دی بلیسڈ پرسنالٹی, دا ہیڈ آف دعوت اسلامی ایگزیکٹو کمیٹی, جس کو آپ کہیں شورا, نگران شورا, حاجی مولانا محمد عمران اتاری انشاءاللہ بہت جلد جلوہ فرما ہوں گے ادھر, اور پھر ان کے مدنی پھول سنیں گے کہ ہم اور صدقے کے حوالے سے. اچھا ایک اور چیز ہے نا صدقہ, حدیث پاک ہے کہ جو آپ کے بیمار ہیں ان کا علاج صدقے سے کرو. آج ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں, بیمار ہیں, النیسز ہیں, ہسپتالوں میں ہیں, سب کچھ, لیکن اس طرف کبھی بھی توجہ نہیں دیتے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. If you look at the past, you know, when we were little, ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے, جو دادا دادی بوڑھے جو لوگ ہوتے تھے نا ہمارے, you know, if anything happened, they start giving charity. کبھی وہ چیز دے دیتے تھے, کبھی کچھ کر دیتے تھے, نیاز نکالتے تھے, صدقہ دیتے تھے. اور ہم مطلب بیمار ہوتے, ٹھیک ہوتے, اسکول جانا ہوتا, جاب کا پہلا دن ہوتا, کام کا پہلا دن ہوتا, وہ کیا کرتے تھے, صدقہ نکالا کرتے تھے. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. آج یہ چیز بڑی کم ہو گئی ہے بلال بھائی, صدقہ بڑا کم, مطلب بیمار ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اس کے علاج پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں, لیکن صدقہ کے ذریعے بھی بیماروں کا علاج ہوتا ہے نا. حدیث پاک ہے وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. جی باپو, linking on to this point, meaning Bapu is saying that giving sadaqah to benefit our ill, and many of us have relatives who are ill, who are patient, but maybe due to some type of anger or disagreement between them, we tend to leave them out. Whereas, as Bapu mentioned, that when we give sadaqah in the path of Allah, we should also prioritize who should be given it better. And as we heard from the hadith sharif of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that when we give our sadaqah, we should give it to our ill family members as well. So, without doubt, when we give sadaqah, we should also use it in a correct manner as well. Bapu is including in this is another point that was mentioned is that when we give sadaqah, when, like we mentioned that when we used to get ill, our family member used to give sadaqah that through this sadaqah may he get cured. When we've got taken a new job, through the blessings of this sadaqah, may Allah put barakah in this new job for him. When we're traveling, all the time we used to happen that whenever we're going to leave home, go to a different city, go anywhere else, first put sadaqah, Allah ye jo safar karne jane hai, ba khair wa afiyat na log pura hi jaye. The jara zain see all the time we used to keep this with us all the time, that when we give in the way of Allah,
whatever difficulties, problems are going to come in our way, that sadaqah, it will be a hurdle for that. Yeah. And we know this from the narration of the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam, that giving sadaqah, it removes 70 doors of evil that are going to be open. So this will remove this 70 doors will disappear with our one giving of sadaqah, inshallah. ये तो एक प्रॉब्लम आनी, इधर हम एक प्रॉब्लम पे इतने जो है वो परेशान हुए, 70 प्रॉब्लम्स जो हैं दूर होती हैं, 70 दरवाजे बुराई के बंद कर दिए जाते हैं। बल्कि ये भी है कि सुबह सवेरे सदका दो कि बला सदके से आगे कदम नहीं बढ़ाती, तो ये भी है बड़ा ब्यूटीफुल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा, निगरान की आमद, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मरहबा बोलो मरहबा 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 सने शुरा मरहबा मरहबा निगराने शुरा मरहबा मरहबा झूम कर बोलो मरहबा। माशाअल्लाह निगरानी शुरा को मरहबा कहते हैं। आज ही यूके तशरीफ लाए और हमारे सिलसिले के अंदर, और इनके कीमती मदनी फूल भी होंगे। हुजूर कुछ सवालात भी हैं, पहला मौका मिला है, आपका सिलसिला जो है चल रहा है, कुछ इस्लामी भाइयों ने मैसेजेस भी भेजे, और हमारा जो टॉपिक चल रहा है इंशाल्लाह उसके हवाले से भी आपके मदनी फूल हम लेंगे। हमारा टॉपिक जो है वो सदका, बड़े वास्ट मायनों में ये आता है, इस पर डिस्कस की जा रही है। लेकिन पहले तो आप ये इरशाद फरमाए, यूके में आपका ये 7th ईयर यानी 7वां सफ़र है आपका, माशाल्लाह। तो कैसा फील करते हैं यूके के बारे में, और जो आप पहले जब आपका 2013 में और अब 2019 में तभी आए हैं, लेकिन इस दौरान में आना जाना और फिर दावत इस्लामी के मदनी कामों को और यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं, और उस हवाले से जो आप जब भी आए हैं माशाल्लाह कुछ ना कुछ ये है मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए भी, के जब भी आते हैं तो जो मसाइल होते हैं, जो यहाँ की प्रॉब्लम्स होती हैं, निगरानी शुरा पूछते हैं और फिर उसको हाईलाइट किया जाता है, उनको बताया जाता है बयानात के ज़रिए, और इससे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी के ऊपर। बहुत सारी रेक्टिफिकेशन होती है, बहुत सारी चेंजिंग भी आती हैं। अल्लाह ताला को मज़ीद बरकत अता फरमाए, इनकी जान माल इज़्ज़त आबरू में, इल्म में, हिल्म में। जी हुज़ूर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। देखिए, जहाँ भी जाना होता है तो चूँकि दावत इस्लामी का काम तो पहले से ही यूके में जारी रहा है, मैं तो काफ़ी लेट आया हूँ, तो लेकिन जब यहाँ हाजिर हुआ तो डेफिनेटली पहले से ही यहाँ पर दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान मुबल्लिगीन काम तो कर ही रहे थे। और लेकिन ज़ाहिर है कि जहाँ काम ज़्यादा हो और काम जब ग्रो करता है तो इश्यूज़ भी आते हैं। फिर ये कि मैं जो देख रहा हूँ, जो आपने मुझसे सवाल किया, 7 साल, 7वां मेरा विजिट है, तकरीबन 6 हो चुके हैं। तो मैंने तो हर साल यहाँ आने के बाद दावत इस्लामी के कुछ ऐसे शोबे और काम हैं जिनमें मैंने तरक्की देखी है कि माशाल्लाह इस्लामी भाई। ज़ाहिर है पूरा साल तकरीबन मेरा साल में एक बार विजिट होता है, और ऑलमोस्ट 10 माह, 10 मंथ, 11 मंथ, 12 मंथ के ड्यूरेशन में आने का सिलसिला रहता है। मोस्टली तो मैं तकरीबन दिसंबर में ही आना हुआ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तभी दिसंबर ही था, और 12वीं शरीफ की तैयारियां भी जारी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना। यस, 12वीं शरीफ की तैयारियां फ्यू इयर्स जो शुरू के तो वो रबीउल अव्वल, माह रबीउल अव्वल का वो सिलसिला भी होता था, तो हम इज्तिमा भी करते थे और जश्न विलादत की तैयारियां भी जारी रहती थी। अल्लाह का शुक्र है कि मदनी मराकिज़ में इजाफा, और स्पेशली तौर पर मैं देखता हूँ कि यूके में हमारे इस्लामी भाइयों ने मसाजिद भी बनाई। मसाजिद के साथ साथ इंस्टीट्यूशन जो होते हैं इल्म दीन हासिल करने के, तो इस इंस्टीट्यूशन को भी माशाल्लाह हमारे इस्लामी भाइयों ने इस जिम्मेदारी को भी लिया और उसको ऑन किया, और पहले से ज़्यादा जामिअतुल मदीना भी हैं, पहले से ज़्यादा मदरसतुल मदीना भी हैं, और
ड्यूरिंग दिस ईयर माशाल्लाह हमारे इस्लामी भाइयों ने जामिअतुल मदीना से ग्रेजुएशन भी किया। सुभान अल्लाह, तो बहुत सारी प्रोग्रेस हैं, लेकिन जाहिर है कि इत्मीनान नहीं होना चाहिए, जी। क्योंकि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। और अगर हम ओवरऑल मुस्लिम पॉपुलेशन के भी अगर हम डिस्कस करते हैं तो डेफिनेटली कि अभी बहुत सारे एरियाज और बहुत सारी कम्युनिटीज़ तक हमारे पहुंचना बाकी है। जी। तो अभी तो है, अभी कई शहर ऐसे हैं जिनकी डिमांड्स आज भी हैं, तो उनको भी फुलफिल करना है। तो ओवरऑल ये कि ग्रेजुअली अगर हम बात की जाए तो हर साल में कुछ ना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी और तब्दीली और पॉजिटिविटी नज़र आती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बेसिकली ये होता है, मैं व्यूवर्स को भी थोड़ा सा बताता चलूँ कि दावत इस्लामी का काम, नॉर्मल क्वेश्चन यही बनता है दावत इस्लामी का काम, द वर्क ऑफ दावत इस्लामी, बट क्वेश्चन इज दैट what is the work of Dawat Islami? What is Dawat Islami क्या कर doing? रही है दावत इस्लामी? Work of Dawat Islami means build मसाजिद और मसाजिद को आबाद करना, ये दावत इस्लामी है। और इल्म दीन को आम करना, स्पेशली द नॉलेज ऑफ ऑब्लिगेटरी नॉलेज ऑफ दीन, सो ये कंपलसरी जो हमारे लिए मालूमात नॉलेज होती है। कुरान करीम सिखाना, यू नो वेरी वेल कि एक मेजॉरिटी मुस्लिम्स दे कैन नॉट रीड कुरान वेल, ओके, सो ये एक काम है। अब इसके लिए डेफिनेटली जब आप एक बिल्डिंग बनाने जाते हैं, इफ यू वांट टू, आप बिल्डिंग जब बनाते हैं तो बिल्डिंग बहुत सारे मटेरियल से बनती है ना, देयर सो मेनी मटेरियल्स, और एक पूरी प्लानिंग से बनती है। तो जब आप एक काम करते हैं तो वो एक काम, उसको करने के लिए उसके पीछे बहुत सारी वर्किंग होती है, एक मतलब बॉडी होती है जो उस काम को करती है, उसकी प्लानिंग होती है उस काम को करती है। तो वो कहता है थिंक इन माइंड, प्लानिंग ऑन पेपर एंड एग्जीक्यूशन ऑन अर्थ, इसको कहते हैं ना, कि सोच दिमाग में होती है, फिर उसको आप पेपर पे प्लान करते हैं और उसको लैंड पर, जमीन पर उसको आप एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, ये डेफिनेटली ये भी ये 3 फेस हैं। फिर आप उसके टारगेट को अचीव करने के लिए एफर्ट्स करते हैं, ठीक। तो ये पूरी एक वर्किंग है, इसका पूरे पीछे एक मैकेनिज्म होता है, तो उसको एस्टेब्लिश करना, फिर उसको लेकर चलना, और अल्टीमेटली जो इसका जो हमें रिजल्ट लेना है वो ये लेना है कि मुसलमान और कौम को, उम्मत को किस कदर दावत इस्लामी के जरिए फवाइद हासिल हुए, बेनिफिट ये किसको पहुंचेगा। बेनिफिट तो डेफिनेटली एक आम अवाम को पहुंचेगा, आपके बच्चों को पहुंचेगा, आपकी फैमिलीज को पहुंचेगा। अच्छा, ये तो नॉलेज की बात है, लेकिन जब आपके दिल में खौफ खुदा पैदा होता है, फेयर ऑफ अल्लाह, जब आपके अंदर एक दीन की मोहब्बत पैदा होती है, एक एहसास पैदा होता है, बात तो करने को ह्यूमन राइट्स की अपनी जगह पर है, लेकिन डेफिनेटली जो राइट्स पर डिस्कशन इस्लाम और दीन करता है वो एक बिल्कुल वो एक्सक्लूसिव है। इस्लाम की जो इस मामले में जब हमारे जो हमें जो इस्लाम ने जो बात पहुंचाई वो बहुत एक्सक्लूसिव है, क्योंकि वो राइट्स की बात करेगा और खोल कर करेगा, ओपनली करेगा। सिर्फ राइट्स ऑफ मैन नहीं है, राइट्स ऑफ फादर, राइट्स ऑफ ब्रदर, राइट्स ऑफ हस्बैंड, देयर आर ऑल आर मैन, राइट्स ऑफ सन, राइट ऑफ सन, ओके, ग्रैंडफादर। सिर्फ राइट्स ऑफ वुमेन की बात नहीं करेगा, सुभान अल्लाह, राइट्स ऑफ मदर, राइट्स ऑफ सिस्टर, राइट्स ऑफ वाइफ एंड राइट्स ऑफ डॉटर, ओके। सो सिर्फ एक वो कहते हैं मेन काइंड जिसको आप बोलते हैं, राइट्स ऑफ नेबर, जी, ओके। तो जब इस्लाम डिस्कस करता है और इस्लाम की डिस्कशन बहुत खुलकर और बहुत वाज़े तौर पर होती है, तो तमाम चीजों को अलग अलग पार्शली और उसको बयान किया जाता है, तो हम समझ जाते हैं क्या। तो जब दावत इस्लामी का काम बढ़ता है और दावत इस्लामी के करीब आप आते हैं
और आपके करीब दावत इस्लामी आती है तो आपके अपने अंदर अलग अलग ये जितनी भी मतलब के जो ह्यूमन राइट्स के नाम पर जो फिर हर चीज को जो तकसीम किया गया है वो जब आपके अंदर इस्टेब्लिश होती है वो चीज तो डेफिनेटली इसका जो असर है वो आपके एक फैमिली जो आपका जो एक घर है तो वो गोया के समझे रियली होम स्वीट होम हो जाता है. लास्ट ईयर बड़ा emphasize किया था and beautifully mentioned in few occasion in different cities the lecture especially about the home sweet home कि घर को किस तरह स्वीट होम बनाया जाए. खाली बोर्ड लगाने से तो होम स्वीट होम नहीं ना हो जाएगा. होम स्वीट होम तो यानी कि चीनी पड़ी रहने से चाय मीठी नहीं हो जाती जब तक चीनी को चाय में ना डाला जाए. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. शहद बोतल में रहने से मुंह मीठा नहीं हो जाता जब तक कि शहद को चखा ना जाए. क्या बात. मिठाई देखने से ही मुंह मीठा नहीं होता जब तक मिठाई खाई ना जाए. तो बोर्ड लगाने से होम स्वीट होम नहीं बन जाता जब तक के स्वीटनेस घर के अंदर और आपके किरदार में होगी तो होम स्वीट होम बनता है. तो ये दावत इस्लामी करती है. माशाल्लाह, माशाल्लाह. पिछली दफा तो बहुत होम स्वीट होम और टॉपिक बड़ा चला माशाल्लाह. बाकी फैमिली इश्यूज बहुत हैं. लास्ट जो आपके 6 विजिट हो चुके और 7 हर दफा एक डिफरेंट टॉपिक डिफरेंट जो है वो चीजें आती हैं और फिर बात भी होती है और पहले के इस वक्त किन चीजों को हाईलाइट किया जाए तो खास कोई इस दफा. हर दफा 2-3 टॉपिक तो कॉमन होते हैं लेकिन मैं आपको रियली बात करूं मेरा जो सबसे बड़ा जो हर्डल है ना जी वो लैंग्वेज बैरियर है. मैं मतलब मुझे इतना इंटॉक्सिकेंट जो डिजीज है जो मतलब नशे का जो प्रॉब्लम है और स्पेशली हमारे यूथ में जो ये बहुत मुझे इतना दिल करता है कि मैं इस पे इतना बोलूं और आई हैव अ लॉट ऑफ मटेरियल अबाउट दिस टॉपिक बट मैं कंफ्यूज होता हाउ कैन आई डिलीवर कि मेरे पास जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि मतलब इंग्लिश वर्डिंग नहीं है. और जब अब ये जो मेरे व्यूवर्स है ना ये समझते होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब आपको इंग्लिश नहीं आती ना और आपको जैसे अभी कर रहा हूं मैं और एक समझाने के लिए जब मैं इंग्लिश बोलूंगा तो मुझे अपनी वो मुझे वर्डिंग पर गौर करनी पड़ेगी. वर्ड क्या होगा तो वो आदमी चीजें एक्सप्रेस नहीं कर सकता. सही फरमा रहे हैं. तो अभी मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि यार अब हर जबान के एक अपने मुबल्लिग होते हैं. अब इंग्लिश का एक अपना होता होगा हमको नहीं इंग्लिश इतनी आती. लेकिन एक तो ये इशू है आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. लेकिन हुजूर आपके इज्तिमात में देखें एक तादाद है यंगस्टर्स आती है उर्दू के अलावा यंगस्टर की. हमारी इधर जो जनरेशन है उनमें अभी माँ बाप ने इसको खत्म पूरा नहीं होने दिया है. ये एक बात है लेकिन वो एक आप लोगों ने तो हमारा माइंड बनाया हुआ है इतनी उर्दू इतनी जल्दी नहीं समझ देता. लेकिन लाइव कवर करोगे अंदर वो करते हो लाइव वो करते हो. आपके इज्तिमा में एक तादाद है जो आती है तो आपके जो मतलब एक एक्शन है आपका वे ऑफ डिलीवरी है उसको लाइक किया जाता है उसको पसंद किया जाता है. तो एक तो ये नशा अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए से निजात दे. दूसरा माँ बाप की नाफरमानी. ये दो बहुत इसको मैं बोलूं कि जनरेशन गैप जो है ना बढ़ रहा है. तो कोशिश यही कि इस जनरेशन गैप को किस तरह फर्स्ट ऑफ ऑल तो मिनिमाइज किया जाए उसके बाद फिर इसको कुछ खत्म करने की तरफ लाया जाए. तो उसमें ये होता है ना कि कुछ ये आगे बढ़े कुछ वो आगे बढ़े तो कुछ बेटों को आगे बढ़ाना होता है कुछ वालिदैन को आगे बढ़ाना होता है. तो ये टॉपिक्स हमने थोड़ा सा गौर किया हुआ है माशाअल्लाह. तो ये चीजें हैं. लेकिन बहुत बेसिक एक प्रॉब्लम बताओ बापू नमाज ही नहीं है. मैंने दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में जाना हुआ है एंड मेरी ट्रेवलिंग जारी है और अभी मैं ट्रेवलिंग ही ऑलमोस्ट है और आगे भी ट्रेवलिंग ही है. तो लेकिन कई मुल्कों को मैंने देखा है यहाँ बेनमाजी बहुत हैं. अब क्या बोलते हो आप लोग बेनमाजियों को इंग्लिश में? Who don't read नमाज. तो सिंपल ये कहते जो नमाज नहीं पढ़ते डोंट रीड नमाज. अब इनके लिए अच्छा वर्ड बन भी नहीं सकता ना. आदत ये अच्छी नहीं है क्या अच्छा वर्ड बनाएंगे यार.
मिस सलाह कोई जो ऐसा नमाज वर्ड मिस होना करे। चाहिए जो इनको बोलो तो इनको बुरा लगे, मतलब बुरा से हर्ट करे, हर्ट भी वो दिल आजारी वाला नहीं, टच फीलिंग कर जाता है, टचिंग वाला कि यार मेरे को यार यूं बोला जाएगा। आप सोचो यार, नमाज ना पढ़ना तो फिर क्या रह गया यार बंदे के पास, नमाज ही ना पढ़े। तो यहाँ मस्जिद, हमें मसाजिद बहुत बनानी है, लेकिन वो मस्जिद है ना, मस्जिद बनती है पैसे से, नमाज ही पैसों से नहीं बनता, अल्लाह ये याद रखें। सुभान नमाजी बनाने के लिए आपको पर्सनल एफर्ट्स करनी पड़ेंगी और वो दावत देनी पड़ती है। तो एक तो ये चीज है, तो इस तरह की चंद चीजें और रियली अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जो जामियातुल मदीना जैसे मैं कहता हूँ, वो फिर मदनी काफिले, क्योंकि ये मस्जिद आबाद होगी मदनी काफिलों से। जब तक आप घर नहीं छोड़ेंगे, सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने जो कुर्बानियां दी हैं दीन की खातिर, जब तक हम अपने अंदर वो पेशन पैदा नहीं करेंगे कि हम कुछ करें। मैं अभी एक कंट्री से आ रहा हूँ जस्ट, तो वहाँ एक वालिद अपनी वो फीलिंग शेयर कर रहे थे बाबू कि बच्चों का क्या होगा हमारे। तो मैं ये कह रहा था कि यार दुनिया भर के लाखों वालिद अपने बच्चों के लिए ही तो कुर्बानियां दे रहे हैं आप, कमाने की। तो कुछ तो इधर भी तो टाइम दे दो ना इसका दीन बचाने के लिए। यानी उसके लिए तो आपने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बच्चों का क्या बनेगा, खुद आपने बढ़कर अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की। तो यहाँ खुद बढ़कर अपने बच्चों को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? दावत इस्लामी विथ यू, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। we are here, दावत इस्लामी here, no fear, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। बट आप तो कुछ करें, मतलब ये मिलकर काम होगा। बेशक मैं खाली पैसा सब कुछ नहीं होता, तहरीक के लिए भी पैसा सब कुछ नहीं है, क्योंकि दावत इस्लामी पर्सनल एफर्ट्स पर काम बहुत ज्यादा यकीन रखती है। तो मेरी ये भी एक दरख्वास्त है कि यहाँ कुरान की तालीम के जो मदरसतुल मदीना है, दरस निज़ामी दारुल आलिम बनाने के जामियातुल मदीना है, और स्पेशली जो दो डिपार्टमेंट है जिसने इस वक्त उम्मत को बहुत मतलब कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ, हमारे लिए दो डिपार्टमेंट बहुत प्रॉब्लम है। नंबर 1 मीडिया, नंबर 2 एजुकेशन। एजुकेशन हमें लेनी है, हमें तालीम भी करनी है, हमें तरबियत भी करनी है, ठीक है, ताकि एक कैरेक्टर बिल्डिंग का एक पूरा जो एक वो काम है वो हम कर सकें। तो दारुल मदीना खोलें आप, स्कूलिंग सिस्टम, और वो कॉलेज तक लेके जाएं, आगे तक लेके जाएं। और मीडिया में ये कि दावत इस्लामी का जैसे मदनी चैनल है उसको लें। सोशल मीडिया पर लोग परेशान, बिल्कुल सोशल मीडिया पे लोग बिजी हैं, तो आप अपने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को इंगेज करें। इसी तरह आप व्हाट्सएप वीडियोस के जरिए लोगों को इंगेज करें। तो हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके जरिए आप लोगों को इंगेज करें। ऑनलाइन मदरसतुल मदीना के जरिए आप इंगेज करें। तो ये पूरी जैसे कि दावत इस्लामी का एक अपना डिजिटल नेटवर्किंग सिस्टम जो है माशाअल्लाह, उसको इंशाल्लाह इस बार मैंने नियत की है कि हाईलाइट करने की इंशाल्लाह। काफी एप्स भी हैं, मोर देन 30 माशाल्लाह अब्दुल रबीब भाई आ गए, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मरहबा, माशाअल्लाह, हमारे को निगरानी कियामत पर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आज अब्दुल रबीब भाई? ठीक है, मरहबा। आपका सिलसिला माशाल्लाह मैंने पाकिस्तान में भी 2-3 बार देखा, और तो ऐसे एक मिथ टूटी है। यानी एक यूँ समझिए कि यूके वालों का एक कहना था कि रात इतनी देर से 9 बजे के बाद नॉर्मली सिलसिला सक्सेसफुल नहीं हो सकता, लेकिन माशाल्लाह मुझे मदनी चैनल इंग्लिश की टीम ने भी बताया कि जब से ये 9 बजे के बाद सिलसिला शुरू हुआ है तो कॉल्स भी काफ़ी आ रही हैं, फीडबैक भी बहुत अच्छा है। तो माशाल्लाह हर टाइम का स्लॉट के व्यूअर्स होते ही हैं। सरकार आप खाना टेस्टी दो, लोग खाना खाने आएंगे। आप अच्छा मटेरियल, अच्छे एनवायरनमेंट में और ऑथेंटिकेट मटेरियल डिलीवर करें।
अल्लाह ने चाहा तो लोग सुनने के लिए आएंगे। यानी मुझे याद है जब साउथ अफ्रीका और यूके वगैरह का हमने सफर किए थे तो बापू हमें यही कहा जाता था कि लोग 7-8 बजे के बाद They don't give you time. हाँ नहीं, इधर 12-1 बजे कोई जाता नहीं है, हमें इजाजत लेनी होती है। ऐसे ही। तो ऐसा नहीं है बापू, लोग दीन सीखना चाहते हैं। लेकिन ये भी एक दावत इस्लामी खासा, दिस इज आल्सो द स्पेशलिटी ऑफ दावत इस्लाम. पीपल normally they don't stay 11 o'clock 12 o'clock, but you know for the Islamic lectures and this माशाल्लाह दावत इस्लामी की गैदरिंग्स होती है आपकी पूरी रात बिठाना. 12वीं की महफिल अगर आप ले लें, 11वीं की महफिल ले लें, ये भी कह सकते हैं कि दावत यूके के अंदर दावत इस्लामी का खासा फैजान है माशाल्लाह. फैजान अत्तार जारी रहेगा माशाल्लाह, no doubt. One of the reasons, Bapu, for this is that Alhamdulillah Amir al-Sunnah has given us such topics that hit the heart directly. Alhamdulillah Amir al-Sunnah has given us those topics that relate to everyone. Generally, when Nigrani Shura, Haji Abdul Habib, Amir al-Sunnah during the Madri Muzakri as well, when they speak, when they converse, no one will feel like that this topic is not for me. Everyone will think that this topic is mine. Alhamdulillah, Nigrani Shura just mentioned some core issues in our society. Number one, about intoxication, drugs, alcohol, how it's increasing in our society. And along with that, education. It's a major thing. Every single parent is worried about the education of their offspring, their children. What are they going to do? Be it Islamic education as well as worldly education. Alhamdulillah, Dawat Islami has a platform, has an institute for both of them. When it comes to Madrasatul Madina, Jamiatul Madina and Dawat. In this time, I think, if I'm not wrong, mostly parents, they want Islamic schooling system. Definitely. Those are Muslims, alhamdulillah, they need that. They need that. Why? Because they did experiment, Yes. but unsuccess, negative marking. Yeah. And now they realized that those way was not good. And now Islamic way is correct. तो ये मतलब ऐसा लगता है कि ये समझ आ गई अब लोगों को. The best way is the Islamic way, no doubt. तो ये थोड़ा आगे पीछे हो गई कौम. तो इसलिए मेरी तमाम यूके, स्पेशली यूके, अमेरिका, कनाडा, साउथ अफ्रीका, ऑल वेस्टर्न कंट्रीज, ऑल यूरोप कंट्रीज, करोड़ों मुसलमान यूरोप में बसे हुए हैं. और वहाँ जितनी मसाजिद और इंस्टीट्यूशन की जरूरत है यूके से बहुत ज्यादा. अगर मैं कहूँ यूके से 1200,000 टाइम यूरोप के अंदर इस वक्त जरूरत है, तो शायद ये गलत ना होगा अब्दुल हबीब भाई, बहुत ज्यादा जरूरत है. नहीं मेरा शायद अभी इस बार अभी भी माशाल्लाह तीसरा चौथा विजिट है यूरोप का, अभी इंशाल्लाह 3rd of जनवरी. सो लेकिन अगर यूरोप के लोग सुन रहे, क्योंकि वहाँ इंग्लिश ही नहीं है ना. अब यूरोप को तो यूँ बोलो ना, कोई मसला ही कोई नहीं है. यूरोप में 2 जबान है, या तो उसकी अपनी नेशनल लैंग्वेज है या उसकी कंट्री लैंग्वेज है. थर्ड लैंग्वेज कोई और होती होगी, लेकिन स्पेशली ये 2 लैंग्वेज यूरोप में है. तो हम जितना भी एशियन उर्दू वाला तबका यूरोप के अंदर है, उनको मैं खास तौर पर अर्ज कर रहा हूँ कि प्लीज अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को बचाने के लिए जो मैंने अर्ज किया उसके ऊपर अमल करने की कोशिश कीजिए. यूके वालों ने फिर भी बहुत कुछ किया है, यूरोप में बहुत कुछ करना बाकी है. अभी यूके में बहुत कुछ है. यूके बहुत सारे मुल्कों के मुकाबले में यूके ने एक अच्छी तरक्की की है. मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें खास कर मैं आपको अर्ज करूँ, जहाँ दावत इस्लामी और इसके मुबल्लिगीन की कोशिशें हैं, देयर इज नो डाउट कि इसमें उलमाए अहले सुन्नत का जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है. माशाल्लाह. मैं बिल्कुल आपको इस बहुत क्लियरली कर, जब हम यहाँ आए तो हमने देखा है ना मसाजिद और ये जो मदारिस और माशाल्लाह जो दावत इस्लामी को इन्होंने वेलकम किया है, इज्जत दी है, और एक अच्छा कोलैबोरेशन माशाल्लाह बना हुआ, अल्लाह की रहमत है. सो ये मैं अर्ज को तो दुनिया भर के मुसलमानों को चाहिए कि इस पर गौर करें. माशाल्लाह माशाल्लाह. अब्दुल हबीब भाई आए, इससे पहले हम यही बात कर रहे थे, निगरानी शुरा आते हैं, कुछ ना कुछ टारगेट होता है, कुछ ना कुछ अहदाफ होते हैं और दे के जाते हैं, और फिर उसके बाद उस पर वर्किंग भी कुछ लाइन भाई करते हैं और कुछ ना कुछ अचीवमेंट भी होती हैं. तो
تو ابھی جیسے کہ پیپر تک ہوتا ہے, پہلے تھنک ہوتا ہے, پھر پیپر پہ ہوتا ہے, پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرنا. Think in mind, planning on paper, جی execution on earth. یہ 3 مدنی پھول بڑے زبردست مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ملے ہوں گے. ہمارے عبدالحی بھائی تشریف لائیں. کافی سادہ کالز مجھے بتایا جا رہا ہے. کامران اطاری عرض کر رہا ہوں لیسٹر سے. ماشاء اللہ عز و جل نگران شورا اور رکن شورا کی UK میں آمد مرحبا. اللہ پاک آپ کا یہ سفر مزید مبارک فرمائے. رکن شورا سے عرض ہے کہ ہمیں یہ کلام سنا دیں. مجھے شوق ہے مدینے جاون دا, میرے دل وچ حسرت اور نہیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین. لگتا ہے 2-4 کالیں انہوں نے فرمایا کہ یہی عبدالحی بھائی کے نام سے جو یہ کلام ہے ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مینو شوق مدینے جاون دا, میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. مینو شوق مدینے جاون دا, میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں. آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں. میری عقل بھی نہیں, میری شکل بھی نہیں, مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں. میری عقل بھی نہیں, میری شکل بھی نہیں, مینو یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں. میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں, میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں. میری جامی ورگی ٹور نہیں, پر مینو شوق مدینے جاون دا, میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. میرا عشق یہ کہندا ہے حوصلہ رکھ, آقا دا بلاوا آوے گا, پر کی کریے بے صبری دا, پر کی کریے بے صبری دا. میرے دل وچوں جاندا چور نہیں, پر مینو شوق مدینے جاون دا, میرے دل وچ حسرت ہور نہیں. آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اجازت عطا فرمائیں. بہت شکریہ سر. جزاک اللہ خیر. کنٹینیو کریں انشاءاللہ. مدنی کے ناظرین مدنی چینل دیکھتے رہیں. اب تو کڈس مدنی چینل بھی آ چکا ہے. پاکستانی وقت کے مطابق 4 PM to 6 PM اس وقت اس کی ٹرانسمیشن ہے, اور انشاءاللہ اس کو مزید کس طرح لے کر چلیں گے, کیا کیا ہوگا, اللہ نے چاہ تو حاجی عبدالحبیب انشاءاللہ شیڈول بھی ڈسکس کر لیں گے یہاں کا, اور کڈس مدنی چینل کا بھی پراپر انٹروڈکشن بھی دے دیں گے. دعوت اسلامی کے مدنی اور خوبصورت اور بیوٹیفل انوائرمنٹ ماحول سے وابستہ رہی ہے انشاءاللہ. دنیا بھی اچھی ہوگی, آخرت بھی اچھی ہوگی. صلو علی الحبیب. بہت بہت شکریہ. آپ لوگ کنٹینیو کریں, میں نکل پلیز.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा आज का टॉपिक था अब्दुल हबीब भाई सदकात। माशाअल्लाह। तो लोगों के जहन में हमने कुछ डिस्कस किया ताकि जहन में फौरन आता है यार पैसों की बात होगी, फिर हमारे मुबल्लिगी ने बताया मुस्कुराना भी सदका है, किसी की मदद करना भी, इसके भी सदके का सवाब मिलता है। तो कुछ इसके अब कुछ आप भी मदनी फूल इस हवाले से देखें। बात वही है कि किसी के लिए खैर खाही मुस्लिम जो है बेसिकली सारी चीज़ें अगर हम समअप करें ना, जैसे मुस्कुराना, किसी का ख्याल करना, किसी के लिए रास्ता दे देना, किसी की मदद करना, ये सब सदका है। तो ये सब आता है चैप्टर हुस्न अखलाक में। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है जिसका मजमून है कि क़यामत के दिन सबसे ज्यादा लोग जन्नत में जाने वाले हुस्न अखलाक वाले ही होंगे, यानी करेक्ट और अच्छे मैनर्स वाले ही जन्नत में जाएंगे। और नबी पाक अलैहिस्सलाम एक और जगह इरशाद फरमाते हैं जिसका मजमून है कि मुझे अखलाक की तकमील के लिए ही भेजा गया है। तो नबी पाक की जो माशाल्लाह अगर हम सीरत को पढ़ें तो यकीनन सखावत, जैसे आपने कहा कि सदका के जब भी सदके की बात होती है तो माल का सदका, तो यकीनन माल का भी सदका देना चाहिए। और हम माल का सदका तो दें और उसके साथ साथ हमारी ज़बान दूसरों को तकलीफ पहुंचाती रहे, हमारे अखलाक के जरिए लोग डिस्टर्ब होते रहें, तो ये भी नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक, अच्छा सखावत भी जो ना बापू, ये भी अखलाक का ही एक वस्फ है और ये भी नसीब वालों को मिलता है। सखी अल्लाह को बड़ा पसंद है। बल्कि पिछले दिनों में एक रिवायत पढ़ रहा था, शैतान कहता है मुझे हमेशा खौफ रहता है किसी फाजिर सखी से। फाजिर होता है गुनाहगार, कहता है मैं गुनाहगार सखी से डरता रहता हूँ क्योंकि मुझे ये डर होता है कि इसकी सखावत की वजह से अल्लाह ताला कभी भी इसके गुनाह माफ फरमा देगा। हालांकि गुनाह कर रहा है मगर साथ सखावत भी है। तो ये बड़ी अच्छी नेमत होती है जिनको नसीब होती है। तो अल्लाह पाक हम मुझे और आपको अपनी राह में खर्च करने का भी मौका दे, जज्बा भी दे। और उसके साथ में भी 3 दिन पहले फैसलाबाद में था और एक जगह पे मुझे इस्लामी भाई ले गए और देयर इज अ ब्यूटीफुल हाउस और मैं यकीन करें इतना प्यार आया उन लोगों, बिजनेस कम्युनिटी के लोग थे। तो अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। मेरा ख्याल है बापू पाकिस्तानी तकरीबन 8-9 करोड़ रुपए की वो जगह थी। उन्होंने कहा कि मेरी वालदा का इंतकाल हुआ है और मैंने ये पूरा हाउस जो है अपनी वालदा के नाम पर बच्चियों के मदरसे के लिए दे दिया। तो मैं वहाँ दुआ करने गया था तो मुझे रिवायत याद आती रही कि सखी अल्लाह को कितना पसंद है। मैंने कहा आप मेरे लिए दुआ कर दें। क्या पता किसकी कौन सी अदा अल्लाह को पसंद आ जाए। पैसा बहुत सौ के पास है बापू, दिल सबके पास नहीं होता। अल्लाह से ये दुआ करें कि लोग कहते हैं हमें उस्मान गनी का खजाना मिल जाए, तो उस्मान गनी की सखावत भी तो मांगो। अल्लाह खजाना दे तो दिल भी दे, वरना बुखल जो है, कंजूसी जो है वो इंसान को बर्बाद करके रख देती है। तो माशाल्लाह ये जब फिक्र होती है ना, इंसान दूसरों की खैर खाई का सोचता है तो वो मुस्कुराएगा भी, वो ख्याल भी रखेगा। और ख्याल रखने में कभी वो अखलाक से ख्याल रखेगा, कभी वो माल से ख्याल रखेगा। तो बहुत खूबसूरत आपका टॉपिक है। अगर हम चाहते हैं कि हमसे बलाएं दूर हों तो ये सदका खैरात देते रहा करें। मुझे एक इस्लाम में बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि उन्होंने घर में एक बॉक्स रखा हुआ है, मदनी अतियात का जो सदका बॉक्स होता है, और उनकी वालदा ने ही ड्यूटी लगाई है कि एक बच्चा, चाहे वो स्कूल जा रहे हैं चाहे वो ऑफिस जा रहे हैं, सब अपने हाथ से पहले सदका देंगे फिर बाहर निकलेंगे, ताकि सदका दे के घर से निकले सारा दिन बलाओं से महफूज है। तो ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरबियत है वालिदैन की। और अपने बच्चों के जरिए भी हमें सखावत करवानी चाहिए ताकि हमारे बच्चे सखी होंगे तो हमारे मरने के बाद हमारे लिए साले सवाब भी करेंगे। आजकल लोग बच्चों को इतना कंजूस बना देते हैं, स्टिंजी बना देते हैं, तुम्हारे पैसे कम नहीं होने चाहिए, खर्च नहीं करना, किसी पे खर्च नहीं करना, किसी फ्रेंड को भी नहीं देना। ये नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर हमें मस्जिद में भी पैसे देने तो बच्चे के जरिए दिलवाएं, बच्चे के जरिए थ्रू दिलवाएं। किसी को खाना खिलाना तो बच्चे के जरिए खिलवाएं, ताकि ये वो ग्रूमिंग है, ये वो ट्रेनिंग है बच्चे की हो गई तो हमारे मरने के बाद हमारा बच्चा हमारे लिए कुछ ना कुछ इशारे सवाब करे। माशाअल्लाह। Just connecting the two beautiful point from Rukn Shura about character and the broader category of having a good character, and then sakhawat as well through your children. The beautiful narration the Prophet sallallahu alaihi wasallam is about the best gift you can give to your children. The best gift you can give to your children, and he connects beautifully both of our topics here jo mazmoon leke chal rahe is nothing financial, nothing to do with money, nothing to do with computer games, nothing. The best gift a parent can give to his child is the gift of good manners. Subhanallah, subhanallah. And if you think about the beauty of Islam, that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, from the very beginning, it was his character that drew the people towards him. That's true. कि तेरी सूरत, तेरी सीरत ज़माने से निराली, तेरी हर अदा प्यारे, दलील बेमिसाली है। The character of the Prophet alayhi salatu wasalam was such that people were drawn close to him because of how great he was. आला हज़रत ने कलाम भी तो लिखा है ना, तेरे खल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खिल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शहा, तेरे खालिक के हुस्न अदा की कसम। इलाही में शम्स दुहा, लामे इलाही
میں شمس و ضحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میرا یہ تھا قسم شب تار میرا یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق حسن ادا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحا وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شاہ کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام بقا کی قسم ہے کلام الہی تیرا مسند ناز ہے عرش پری تیرا مہر میرا زہر ہے امی تیرا مہر میرا ہے روح امی تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ تیرا مثل نہیں خدا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحا MashaAllah, MashaAllah. Good characters we were mentioning, and the beautiful hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that on the day of judgment, the heaviest deeds on the scale was a good manner. تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے our character, our manners. Alhamdulillah Azza wa Jal, رکن شورا ہمارے درمیان موجود ہیں and today's our جو سنت اور ہمارا سیگمنٹ ہے it is also a sunnah, it is smiling. انشاءاللہ ایک مدنی پھول جو ہمارا ہوتا ہے مسکرانا. کچھ اس پہ بات ہوئی تھی صدقے کے حوالے سے لیکن ہمارے پہلے سے اناؤنس تھا کہ یہ بھی ایک سنت ہے تو اس حوالے سے کچھ مدنی پھول. اصل میں اس میں اگر ایک چیز ہمارے بیک آف مائنڈ رہے نا کہ مسکرانا سنت ہے تو جب جب سنت کی نیت سے مسکرائیں گے ثواب بھی کمائیں گے. کئی لوگ مسکراتے ہیں خاص طور پہ جب ان کے بزنس میں یا ان کے کسٹمر سروسز میں یا جب ان کی ایسی جاب ہوتی ہے اور اچھی بات ہے اسمائلی فیس سب کو اچھا لگتا ہے تو لیکن اگر یہ مسکراتے وقت سنت یاد آ جائے گی اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے نا کہ وہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھ سلام. نبی پاک کی سنت سمجھ کر مسکرائیں تو بہت ثواب ملے گا, سنت کا ثواب ملے گا. اور یہاں ایک اور بات میں عرض کرتا رہوں کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں جو خرچ کریں تو کم ہوتی ہے. مسکرانا یہ وہ ٹریجر ہے, یہ وہ خزانہ ہے, جتنا استعمال کریں اتنا بڑھتا ہے. میں مسکراتا ہوں سارے مسکرانے لگ جاتے ہیں. تو یعنی یہ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ لائٹ ہے کہ آپ اس کا بٹن آن کریں باقی سب کے بلب بھی جلنا شروع ہو جاتے ہیں, ہر طرف چراغاں اور روشنی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھا اس میں اس کا بڑا آسان سا ایک سوال ہے کہ اگر میں ویورز سے کوسچن کروں کہ آپ کو کون سا فیس اچھا لگتا ہے, مسکراتا ہوا یا جو نہیں مسکراتا, بہت زیادہ جس کو بورنگ فیس کہتے ہیں,
جب آپ کو مسکراتا فیس اچھا لگتا ہے تو آپ مسکرائیے, آپ بھی دوسروں کو اچھے لگنے لگ جائیں. تو اور یہ اگر یہ سکسیس کی چابی بھی ہے, مسکرانا جو ہے وہ ہارٹ کے اندر انٹر ان دا ہارٹ, یہ راستہ ہے. اگر کسی کے دل میں اترنا ہے آپ مسکرانا شروع کر دیں, لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں. بغیر پیسوں کے جو ہے نا یہ خزانہ ہے, بغیر خرچ کے جو ہے نا آپ لوگوں کے دلوں میں داخل ہو سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا شربت نہ دیں نہ دیں کرے بات لطف سے, یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی. پیٹھی بات کر لیں, مسکرا لیں, کوئی نہ شربت مانگے گا نہ شکر مانگے گا, آپ کا دوست بن جائے گا. سبحان اللہ. ابھی بھی اسلامی بھائی کہہ رہے تھے کہ نگرانی شورا کے حوالے سے کہ ماشاءاللہ نیچرلی ایک ان کا ایک روب ہے, پریزنس ہے, تو بات کرنے میں نا ہیزیٹیشن, ہی واز ہیزیٹیٹنگ, تو فرما رہے تھے کہ اٹ فیلز لائک کہ مے بی ہم بات کریں گے کچھ ہوگا. پھر ویٹ کرتے رہے, پھر نگرانی شورا کو دیکھا انہوں نے اسمائل کیا. جب نگرانی شورا نے اسمائل کیا نا تو ایک دم ریلیکس ہو گئے سارے اسلام بھائی, تو بالکل. تو یعنی کہ ایک اسمائل is infectious. ایک one person smiles in the room, it relaxes the whole ماحول for everybody as well. کہتے ہیں نا 5 سیکنڈ کے مسکرانے سے تصویر اچھی آ جاتی ہے, زندگی بھر کے مسکرانے سے زندگی بھی اچھی ہو جاتی ہے. آپ کے پاس تو پھر کوٹس بھی نرالے ہوتے ہیں, تو مسکرانا چاہیے نا, تصویر کھینچاتے ہوئے 5 سیکنڈ کی مسکراہٹ ہوتی ہے. تو عبداللہ بھائی تو بڑا کہتے ہیں ذرا وہ تصویر اچھی ہے تو مسکرانا چاہیے, زندگی بھی اچھی ہوتی ہے. یاد آیا ایک جگہ ہم گئے جرمنی میں, تو سارے اسلام میں اب تو یہ نیا کام شروع ہو گیا نا, اب تو ملاقات کے بعد ہمیں سیلفیاں بھی کھنچوانی پڑتی ہیں. بلکہ اب تو ایسا لگتا ہے تھوڑے دنوں بعد ہمارے پوسٹرز پہ لکھا ہوگا, وہ کہتے ہیں نا اجتماع کے بعد لنگر کا انتظام, اجتماع کے بعد سیلفی کا انتظام ہے. تو ہم ایک جگہ گئے تو سارے لوگ کھڑے ہوئے, تو کہا آپ کے ساتھ گروپ فوٹو لینا. جب ہم کھڑے ہوئے تو ایک بندے نے کہا سب مل کر کہیں بشیر, تو میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیوں کہا اس نے. تو جب بشیر کہتا ہے نا انسان تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. تو میں نے کہا دیکھو کیسے کیسے راستے ڈھونڈے ہوئے لوگوں نے اچھی تصویر کے لیے. بہت پیاری بات کی کہ جب آپ اپنی پکچر کو خوبصورت کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنی لائف کو خوبصورت کر لیں مسکرا کے. سبحان اللہ. ہمارا جو آج کا another segment is about the beautiful wazifa, and that wazifa we announced in the starting, the desires being fulfilled. Inshallah today we'll mention about this wazifa. Amir al-Sunnat has mentioned in the 40 spiritual cures, 40 ruhani ilaj mein, whoever recites this 20 times every day, Ya Rafi'u, Ya Rafi'u, only 20 times, his desire will be fulfilled. Inshallah Azza wa Jal. Very easy wazifa. Every day 20 times only, Ya Rafi'u, Ya Rafi'u. Inshallah Azza wa Jal, the desire will be fulfilled. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So Taqir bhai, yes please. Now, Alhamdulillah, Bapu is speaking very beautifully about many different points. Earlier, just a few moments ago, we were talking about manners. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, in one narration, he mentions that one of the reasons of his arrival into this world, and that was to perfect good character. This is one of the reasons for the arrival of the Rasulullah sallallahu ta'ala into this world. So we should adopt from the character of Rasulullah sallallahu ta'ala as well. And it's very, very important that we pay attention toward this point as well, inshallah. As we're mentioning about sadaqah and how our character, it can fall under sadaqah and charity as well. Our good character, our good conduct with one another can earn us the reward of sadaqah as well, inshaAllah ta'ala. So if we take from the sunnah of the good character of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, then inshaAllah ta'ala definitely we can gain benefit from this as well, inshaAllah azza wa jal. Gulabi putwari thodi si Hafiz bhai. وہی بات ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اگر ہم سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اس سنت پر عمل کراں کہ اسا مسکراں, انشاءاللہ اسا مسکرانے نال جڑے باقی دوست احباب اسا نال بیٹھے ہو سن او بھی انشاءاللہ آٹومیٹکلی انہاں دے چہرے وچ مسکراہٹ آئی جسی انشاءاللہ تعالی. اسا انشاءاللہ تو تھوڑی جی کوشش نال اسا مسکراساں اس نیت نال کہ سنت ہے سرکار نے ادا پر ادا اسا بھی کرنے پہ انشاءاللہ تعالی. اس ادا کی ادا کرتے ہوئے جڑے باقی احباب بھی بیٹھے ہو سن انہاں کی بھی انشاءاللہ فائدہ پہنچی, او بھی خوش ہو جاسن انشاءاللہ تعالی, او بھی مسکرانے لگ سن. تے سب یہ دونوں سے کہ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں انشاءاللہ. اسمائل kills the depression as well. Definitely. ڈپریشن کو بھی ختم کرتا ہے. چلیں کافی ٹائم ہو گیا اور کالز کچھ ہیں. جی مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
محمد رفاقت اتاری پیٹر برو شاذلی زون سے عرض گزار ہوں. ماشاءاللہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری مدہ ضلع کی آمد مرحبا. حضور بڑا پیارا ٹاپک ہے آج. پتہ یہ کرنا تھا کہ اسمائل میں یعنی مسکرانے میں اور ہنسنے میں فرق کیا ہے اور ہمیں کس طرح سے پتہ لگے گا کہ ہم ہنسیں یا مسکرائیں. تو اگر اس کی کچھ مدنی پھول عطا ہو جائیں تاکہ اس کے مطابق ہم مسکرائیں بھی اور لوگوں سے ملیں بھی. اور اس کے علاوہ اگر حاجی عبدالحبیب صاحب کی آواز میں نعت مینو شوق مدینے جاوندہ اگر یہ نعت اگر آپ سنا دیں. I just want to say that this program is very inspirational for me and I watch it every week and it gives my family some knowledge as well and we make dua for them as well. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی. ماشاءاللہ سلسلہ بھی بہت اچھا جا رہا ہے. آپ کو دیکھ کے بھی ماشاءاللہ اچھا لگا. حضور آپ کو ایک ریکویسٹ کرنی تھی. آپ کا جو نیا کلام تھا غوث پاک کے حوالے سے وہ اگر آپ سنا دیں. جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ. میں یہاں ایک بات بڑا اچھی کال تھی اور بڑا اچھا وہ کوسچن بھی تھا اور اس کے تحت میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا. ایک تو مسکرانا اور ہنسنا کہا سنت نہیں ہے, مسکرانا سنت ہے. لوگ بڑی آواز سے ہنستے ہیں, لاؤڈلی جو ہنستے ہیں وہ لاف کرتے ہیں, لافٹر کہتے ہیں, یہ درست نہیں ہے. آپ اسمائل کریں, یعنی اتنی آواز سے اتنی وائس سے ہنسنا کہ لوگ سن لیں, آپ کی آواز لاؤڈ ہو جائے, یہ ہے کہا. مسکرانے میں تو آواز ہی نہیں نکلتی نا. تبسم وہ ہوتا ہے کہ آپ کے دانت ظاہر ہو جائیں, چہرے پہ ایک حشاشت بشاشت ہو. لیکن یہاں میں ایک اور بات بھی بتا دوں, مسکرانا بھی کب یہ پتا ہونا چاہیے. ہاں, اسمائل بھی کا بعض اوقات دل توڑ دیتی ہے. اب کسی کے گھر میں میت ہے, آپ جا کے مسکرا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا نا. یعنی مسکرانے کا بھی وقت پتا ہونا چاہیے. کوئی شخص غمگین ہے اور اس کی تکلیف پر آپ مسکرا رہے ہیں تو وہ الٹا اس کو ہرٹ کرے گی. تو اتنا سینس ہونا چاہیے کہ میں نے کب کہاں مسکرانا ہے, کب کہاں سنجیدگی اختیار کرنی ہے. تو انشاءاللہ پھر اس کی برکتیں بھی آپ کو حاصل ہوں. جزاک اللہ. عبداللہ بھائی دعا انشاءاللہ ہو جائے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. دنیا بھر میں جہاں جہاں تیرے بندے تیری بندیاں ہمارے ساتھ دعائیں میں شامل ہیں, اے اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما, سب کی پریشانیاں دور فرما. ہماری دنیا بھی اچھی کر دے, ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضے اتر جائیں, بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ دعوت اسلامی کو مزید یو کے میں, یورپ میں, ساری دنیا میں ترقیاں عطا فرما. ہمیں بھی دعوت اسلامی کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دینا نصیب فرما. اے رب کریم جو صدقے کے اوپر آج ہم نے باتیں سنی, ہمیں مسکرانا نصیب فرما, حسن اخلاق کا پیکر بنا دے, مسلمانوں کا خیر خواہ بنا دے. اے اللہ مال بھی عطا فرما اور وہ بھی رزق حلال عطا فرما, رزق حلال میں برکت بھی عطا فرما اور سخاوت کا جذبہ بھی عطا فرما. اے رب کریم بخل سے ہم سب کو محفوظ فرما, زوال نعمت سے بچا, جلدی جلدی حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرما. اے اللہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما, اور جب آخری وقت ہو ایمان والی, عافیت والی, مدینے والی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دید والی ہمیں موت نصیب فرما. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير يا فتاح وبك نستعين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا. Keep watching مدنی چینل. مدنی چینل دیکھتے رہیے, مدنی چینل تکتے رہیو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah.